Please write in the chat if I'm not visible. Can you hear me? Yes, sir. Good morning, sir. So, there was some problem. Okay. So, so have you got the information regarding your changes in the exam pattern in there? Okay. So according to that, we will not have our fifth quiz, right? You got that information? Okay, so we'll have only the last quiz will be the fourth quiz that we have scheduled on 13th. Right? So that will be the last quiz. There will be 4 quizzes, and instead of that fifth quiz, I have to give some assignment to you, right? So apart from that, there will be another kind of physical interaction during the last week, that is 18 to 22nd, right? So during that time, we will have a kind of doubt clearing. आपको ये information है? ठीक है? So that is the thing. So in the last week, we will meet in a classroom, and if you have any kind of doubts or any discussion, we can make that. और हमारा room number allotted जो है वो 200. किसी को पता है हमारा room number? नहीं पता. Okay, 211 है. So 18 to 22 के बीच में आप लोग उस क्लास में आइएगा. We'll have some doubt clearing. So we'll get actually three such meetings मैं check कर रहा था. So 18 to 22. Okay. So हमारे पास अगर क्लास देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है. ये तो आज का क्लास है, ये थोड़ा टाइम बचा है, और नेक्स्ट वीक में भी 1-2 क्लास ही होगा. 12 and 13. So 12 and 13. तो 13 का क्विज का टाइम कहोगे तो थोड़ा हम शिफ्ट कर देंगे और किसी टाइम को, और 13 को हम पढ़ा लेंगे. ठीक है? देन 15 इज गोइंग टू बी हॉलीडे. आप लोग सुन पा रहे हैं हमको? तो मैं बस यही आगे का प्लान बता रहा था. 15 इज हॉलीडे, तो बस वहाँ पे हमको उस वीक में 2 क्लास मिलेगा, 12 and 13.
और जो लास्ट वीक है उसमें हमको 19, 20 एंड द लास्ट थिंग दैट इज 22 आपके लिए जो ये 3 क्लास जो है 19, 20 and 22. I'll request all of you, irrespective of whether you have any doubts or not, all of you, all the 102 students, to have at least come to the room number 211 for the last 3 days. So that will be the only time in which we can have some interaction and have some doubts or anything. Even regarding the assignment also we can discuss and submit the assignment there itself. So that is mandatory for all of you. All the I'll take physical attendance of all the 3 classes that we have. Is it okay? Okay. So let us utilize the time left with. So yesterday I was talking about the time cost. I hope you are able to see the slide. Okay, so we are talking about the time cost trade-off that happens in case of these projects, and because of something which is called crashing up a project. So crashing up a project is basically reducing the time taken by an activity by utilizing more resources, right? So look at this figure. Yesterday also we have discussed a bit about this. So this is a line. This is a line. And you can find the cost slope of this line for each and every activity, right? Not for project. For each and every activity, you can have a line like this, right? The slope may vary. So how the slope is decided? The slope is decided by this del y by del x. So basically it is the difference between the crash cost minus the normal cost, that is del y, and del x is the normal duration माइनस द क्रैश ड्यूरेशन. ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हो कॉस्ट स्लोप इज गिवन बाय दिस क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट बाय नॉर्मल ड्यूरेशन माइनस क्रैश ड्यूरेशन. So this cost slope of each and every activity helps us to identify that whether this activity is a suitable candidate for crashing purpose or not. Because there may be some activities which are very expensive to crash. So in that case, their slope will be more. They will be steeper than the other. I'm sorry. Okay, something is stuck in my throat. So this thing we have already discussed. Now let us take up one example. I hope I will be able to complete it today. Right. Okay, this is also another important discussion. Look at this graph. See what you can see here. This exactly describes the concept of project time cost relations. Right. So on the x-axis, you have project durations, that's time, and on the y-axis, you have the cost component. So for each and every project, what happens? Suppose you decide the project will be completed in a particular time duration. So that is a point on the x-axis. Now corresponding to that, it will move up from that point. Okay. So it will move up from that point on the x-axis. It will intersect the top curve, that is the total cost line, at some point, right? Now, our objective is to find a point on the x-axis, that's the duration, which gives us the minimum total cost. As you can see in this figure, that's the point which is representing the minimum total cost, where the curve is at its lowest position or its minimum point. So how to identify that duration? Because see, as yesterday I told you, or day before yesterday I told you, it is not always economically viable to complete the project at the earliest possible time, right? That way, we are also spending a lot, right? You have to crash all the activities. Even if you are crashing all the activities, then also
then also there is a limit beyond which you cannot minimize the dates, project completion time. Therefore, you have to judiciously select which activities to be crossed and by how much. How much means there may be a maximum limit to which that activity can be crossed, but it's not necessary that we cross it to the maximum possible. So that is the concept of time cost trade-off, time cost trade-off. Now look at the two lines which are below the total cost line. That in fact describes why there is a minimum point. Actually, for each and every project, listen to me carefully. I don't know how many students are there. Only 22. I don't know what effect happens with this new change in the rules, that there are very few people are attending the class. I'm not able to analyze it. So there are two components of cost which are involved with each and every project. Right? One is the direct cost. The other is the indirect cost. If you can see the two lines here. The direct cost is somewhat non-linear. As you can see, it looks like a curve. Whereas indirect cost is a linear cost. You can see a straight line. So what is the nature of these costs? Indirect costs are those costs which you are incurring because of you have some plan to reduce the duration of the project. So direct cost may be, I am referring to direct cost actually. So the direct cost is that cost which you are exactly spending on the project activities. Exactly spending. For example, if you want to reduce the time, you will bring in more machines, you will bring more operators, you will select better material. So these are direct costs. These are direct costs. So these are not directly proportional to the duration of the project. It has a non-linear relationship. But as you decrease these direct costs, the duration increases. That means you can think of the normal completion of a project. So when you are not in a hurry, so you are just implementing the normal processes. So the project duration will be the longest duration possible, and in that case your direct cost will be minimum. So you can see that direct cost line, right? जब ड्यूरेशन बहुत कम है, आप देखोगे कि डायरेक्ट कॉस्ट बहुत हाई है. क्यों? क्योंकि आप शायद क्रैशिंग किए हो, बहुत सारे इक्विपमेंट रिसोर्सेज कंज्यूम किए हो जस्ट टू रिड्यूस द टाइम. इसलिए आप देख सकते हो जब ड्यूरेशन कम है एक्स एक्सिस में, आपका डायरेक्ट कॉस्ट हाई है. बट आज यू गो ऑन टुवर्ड्स द राइट, आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ रहा है, मीन्स आप नॉर्मली सारे एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगा. यू आर नॉट इन ए हरी. So that is the nature of direct cost. So mostly the cost of various resources. You already know what are the resources, right? Now come to indirect cost. Indirect cost, as I said, unlike the direct cost, it is linear. It is just proportional to the x-axis, to the duration of the project. So for each and every project, there are some costs which are just time dependent. Maybe your some kind of rents or some kind of contracts, some kind of power bills, internet bills, which are just proportional to the time. मतलब आपका प्रोजेक्ट जितना डिले हो रहा है, आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड ऑफ होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. ठीक है, प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाता है तो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कम लगता है आपको. सो दीज आर ऑल which are also called overhead cost. Overhead cost like power bills, water charges, जो continuously आपको देना पड़ रहा है irrespective of your output. आपका प्रोजेक्ट में काम चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा. That is indirect cost और overhead cost. या आपके जो स्टाफ्स के सैलरीज है, ठीक है, तो जब आपका प्रोजेक्ट मान लो काम नहीं हो रहा है तो आप सैलरी तो नहीं बंद कर रहे हो, you are still giving the salary, right? So that is overhead cost. So more the duration, higher will be the indirect cost. That's why you can see the indirect cost is a straight line
and it is increasing. I mean, it is going up or the deviation increases. Whether these two costs are clear to you? Okay, okay. So now what is the total cost? Total cost is just the addition of these two components of cost. डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. कोई भी प्रोजेक्ट में आप पूरा एक्सपेंडिचर को दो डिवीजन कर देंगे और टोटल कॉस्ट में उसको ऐड कर देंगे. तो ऑब्वियसली जब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑफ अपोजिट नेचर, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो, एक डिविजन के साथ डिक्रीज हो रहा है और एक डिविजन कर रहा है. सो ऑब्वियसली देयर विल बी मिनिमम पॉइंट. इसी टाइप का कॉन्सेप्ट आपका बहुत सारे जगह आपको देखे होंगे. इट्स नॉट ओनली स्पेशल टू दिस particular project. It is means very similar situations are there in many other subjects and situations. तो जहाँ पे ये हम टोटल करते हैं तो इसका एक मिनिमम पॉइंट जरूर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं. सो दैट इज द थिंग ओनली. तो यहाँ पे भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है, सो इट विल फर्स्ट टू द लेफ्ट इट विल बी वेरी हाई and it will come down and it will reach reach a minimum point. Then after that it will further go on, it will start increasing. ऐसे सिचुएशन बहुत जगह पे होता है, आपको पता होगा. तो ये सेम चीज है कि यहाँ टोटल कॉस्ट का एक मिनिमम पॉइंट है. तो ये जो मिनिमम पॉइंट है, इफ यू कैन फाइंड दैट डिविएशन, दैट मीन्स अगर आप उस डिविएशन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो तो एटलीस्ट आप कह सकते हो कि आई हैव स्पेंड द मिनिमम. ठीक है. अगर उससे डिले करते हो तो भी आपका टोटल कॉस्ट बढ़ जाता है. अगर उससे पहले भी खत्म कर देते हो तो आपका टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाता है. बट वहाँ पे आप कह सकते हो कि सर टोटल कॉस्ट तो बढ़ गया बट वी आर एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट अर्लियर. तो हो सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप at any cost you want to complete it. So in that case I will not say that you go for the minimum cost. ठीक है. Try to understand. कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो. अगर टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, सो यू कैन वेरी वेल कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट दिस पॉइंट जहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट पूरा मैक्सिमम में है. पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पॉइंट देखिए जहाँ पे कॉस्ट सबसे मैक्सिमम है, बट द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम. अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है, there is a pressing need for that and you are ready to spend, then you can complete it at the earliest, at a cost, at the highest cost. But practically if you are concerned about the money also, cost also, so it is better to complete it at this minimum cost point where the project duration you can find. If you are delaying it further, that is definitely not at all useful. अगर आप ये जो कॉस्ट का जहाँ मिनिमम पॉइंट है और उसके जो करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उससे अगर डिले करते हो तो आप खुद बता सकते हो कि देयर इज नो बेनिफिट एट ऑल. एक तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है प्लस आपका टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है. मीन्स यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम एनी साइड. बट यस, अगर आप मिनिमम पॉइंट से लेफ्ट के साइड में कंप्लीट करना चाहते हो and you are ready to spend a bit more, but you are getting the benefit that you are able to complete the project earliest. ठीक है. So is it clear to you, time cost relationship or any questions? Okay, so I assume you have understood it. Even if you have any doubt, you can bring all these kind of doubts to those physical classes so that you can have a good discussion there. Now let me take one example. I do not know whether I will complete it or not, but anyway I will start it. So this is a numerical example जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टेबल है जिसमें activities preceded by, means this is used to construct the network. ठीक है. ये रिलेशन चाहिए आप नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करने के लिए. अगर आपके पास पेन पेपर है तो ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दिस नेटवर्क, बट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट इट यूजिंग एक्टिविटी ऑन नोड. क्योंकि मुझे याद है इसका सॉल्यूशन एक्टिविटी ऑन नोड के मोड में दिया गया है. एनीवे यू कैन सॉल्व इट यूजिंग एक्टिविटी ऑन आर्क आल्सो, नो आर्क, बट द सॉल्यूशन दैट आई विल शो यू
is activity on node. So you can say that can you draw the activity on node network for this problem? ये फर्स्ट दो कॉलम देख के आप बना सकते हो, ठीक है. Apart from that, there are some data regarding the cost, normal cost, crash cost, ठीक है. Normal cost and crash cost. शुक्रिया 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 शुक्रिया. There are two data which is under normal and crash. One is the duration of each activity is given, that is the normal duration, and the crash duration of each activity is also given. जैसे activity A का example में ले रहा हूँ. So for activity A, आप अगर फर्स्ट रो को देखोगे, मीन्स अगर आप नॉर्मली इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हो, प्लीज स्विच अप योर माइक. इफ एक्टिविटी ए को आप ले रहे हो तो उसका ड्यूरेशन है 120 डेज. ठीक है, कौन है? आकाश मिश्रा. ओके, तो एक्टिविटी ए का जब ले लो तो इसका नॉर्मल ड्यूरेशन हो गया 120 डेज. राइट, अगर नॉर्मली उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, एंड अगर नॉर्मली इम्प्लीमेंट करते हो तो उसका कॉस्ट आपको लग रहा है 12,000. राइट, यूनिट्स ऑफ कॉस्ट. यहाँ पे कुछ दूसरे कंट्रीज का डाटा है तो इली लिखा है, आप इसको डॉलर रुपीस कुछ भी समझ सकते हो. अगर उस एक्टिविटी को आप क्रैश करते हो, ठीक है, क्रैशिंग ऑफ द एक्टिविटी अप्लाई करते हो, तो आप 100 डेज में उसको खत्म कर सकते हो. ठीक है, 100 डेज can be completed in 100 days instead of 120, but your cost for that activity will become 14,000. तो आपको याद होगा जो कॉस्ट स्लोप आज हम बताए थे, कोई भी एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप के लिए हमको क्या चाहिए? 4 चीज चाहिए: नॉर्मल ड्यूरेशन, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश ड्यूरेशन, क्रैश कॉस्ट. राइट, these are the 4 data which represents 2 points in that x and y कोऑर्डिनेटर सिस्टम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस एक्टिविटी ए का कॉस्ट स्लोप कितना होगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट स्लोप ऑफ एक्टिविटी ए? Yes. What will be the cost slope of activity A? 100. 100 is the right answer. So class cost minus normal cost divided by normal duration minus class duration. So ये जो आपको एक वैल्यू मिला, ये वैल्यू आप इसको कॉस्ट स्लोप में यूज कर सकते हो. सिमिलरली फॉर रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आप निकाल के कॉलम में रख सकते हो. इस वैल्यू से आपको आइडिया मिल रहा है कि एक ये एक्टिविटी हाउ इजी और हाउ कन्वीनियंट इज दिस एक्टिविटी फॉर क्रैशिंग. वैल्यू जितना कम होगा, ठीक है, वैल्यू जितना कम होगा मतलब उसका क्रैशेबिलिटी उतना अच्छा है, मतलब आपका ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ रहा है. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग. अच्छा, इस टेबल में, सॉरी, इस प्रॉब्लम में और एक डाटा दिया है जो मैं बता देता हूँ. Assume the following project data given in the table. It is required to crash the project duration from its original duration to a final duration of 110 days. ये आपको पहले से दे दिया गया कि आप 110 डेज में इस प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते हो, जो उसका नॉर्मल टाइम से कम है ऑब्वियसली. ठीक है. Assume daily indirect cost of 100 currency. ये एक न्यू नया टाइप का डाटा आपको दिया गया. दिस इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे मैंने बताया था, दैट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन टाइम. मतलब जैसे 1 डे के लिए कितना लग रहा है, इसमें सब ओवरहेड चार्जेस है जो यू हैव टू स्पेंड whether something is you are doing or not, like salaries, like other rents, charges, insurance, any such continuous charges. ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है 100 करेंसी यूनिट्स. ठीक है, तो इसी डाटा को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस दिस प्रोजेक्ट टू 110 डेज एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक, तो आज मैं खत्म तो नहीं कर पाऊंगा, बट लेट मी जस्ट स्टार्ट इट विद द नेक्स्ट स्लाइड. यस,
Now look at this figure. Actually, this figure is representing an activity and node type of network diagram. आप बहुत बड़ा बड़ा ब्लॉक देख रहे होंगे, जैसे मैंने बताया था कि जब एक्टिविटी एंड नोड यूज होता है उसमें 4 डिजिट्स यूज होता है। एक्टिविटी एंड आर्क में 2-2 डिजिट का यूज होता है। तो यहाँ पे जो 4 यूज होता है वो आपको याद होगा, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी ए जो ब्लॉक है आप एक देख सकते हैं, एक तो पहला वाला हो गया स्टार्ट, जिसका सारा 0 हो जाएगी। एक्टिविटी ए देखिए जो ब्लॉक ए है, इसमें सेंटर में आप लिख रहे हो एक्टिविटी नेम एंड इट्स नॉर्मल ड्यूरेशन, तो ए इज 120। और जो 4 ब्लॉक है उसमें 0 अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश। अर्ली फिनिश मतलब 0 में जस्ट 120 ऐड किया गया ड्यूरेशन। सिमिलरली उसके नीचे आ रहा है लेट स्टार्ट। लेट स्टार्ट 20 जो है वो ये बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन में मिला होगा, अभी हम नहीं बता सकते कैसे मिला है, लेकिन बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से मिला होगा। तो 20 प्लस अगेन 150, तो ऐसे सबका आपका निकाल के फिल करना होगा फॉर ऑल द एक्टिविटी ब्लॉक्स। अच्छा, उसके नीचे एक फिगर लिखा है, डाटा लिखा है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या इंटरप्रेट किया गया है कि जैसे ए ब्लॉक के नीचे क्या लिखा है 20 @ 100, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग है 20 मीन्स इट कैन बी क्रैश्ड मैक्सिमम अप टू 20 डेज, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर रिप्रेजेंट्स कि ये मैक्सिमम कितना क्रैश हो सकता है। तो इस टेबल में आप देखिए नॉर्मल 120 है, क्रैश 100 है, मतलब 20 डेज तक आप इसको क्रैश कर सकते हो। इट कैन बी रिड्यूस अप टू 20 डेज डिस्क्रीट मैनर में। कोई जरूरी नहीं कि 20 का 20 पूरा क्रैश कर लोगे, उसमें आप 20 में से कुछ डेज को यूज कर सकते हो, 5 डेज 6 डेज जो आपको कन्वीनियंट है। बट इट इज रिप्रेजेंटेड इन ए 1 डे डिस्क्रीट मैनर बिकॉज आपका इंडायरेक्ट कॉस्ट पर डे दिया गया है ना, तो आप उसे और छोटा करके नहीं तोड़ सकते हो। सो एक डे करके आप कम कर सकते हो या कोई भी कन्वीनियंट वैल्यू बिटवीन 0 to 20 फॉर एक्टिविटी ए। तो एक्टिविटी ए के नीचे जो डाटा है उसका मीनिंग है कि ये 20 डे मैक्सिमम क्रैशेबल है @ 100। ये 100 शो कर रहा है, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने पूछा था कि कॉस्ट स्लोप क्या है, तो उसका 100 आप बताए थे। तो दिस इज द 100 रिप्रेजेंटिंग द स्लोप। सिमिलरली और जितने भी आपके एक्टिविटी ब्लॉक है सबके नीचे आप देख सकते हो कि समथिंग लाइक दैट इज मेंशन, लाइक 5 @ 200, 15 @ तो दैट मीन्स आप उतने डेज तक वो क्रैशेबल है। और नेक्स्ट फिगर है उसका स्लोप, कॉस्ट स्लोप। तो जैसे मैंने बताया था जो भी एक्टिविटी जिसका कॉस्ट स्लोप कम है, ठीक है, कम है, दैट इज प्रीफर्ड फॉर क्रैशिंग। ये आप समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे एक्टिविटी ए का 100 है, एक्टिविटी सी का 600 है, तो ए और सी के बीच में अगर आपका ऑप्शन आया कि किसको क्रैश किया जाए, तो आप किसको प्रीफर करोगे? ए को, क्योंकि उसका कॉस्ट स्लोप कम है। इसका रीजन भी आप जान लीजिए। कॉस्ट स्लोप कम है का मतलब क्या है? कॉस्ट स्लोप कम का मतलब है कि उसका डेल वाई बाई डेल एक्स कम है। मतलब डेल वाई मतलब आपका जैसे एक दिन कम करने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है एक्स्ट्रा, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली कॉस्ट स्लोप, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 100 यूनिट्स आपको खर्च करना पड़ रहा है टू रिड्यूस बाय 1 डे, ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली जो 600 है उसके कंपैरिजन में जो 100 है उसको आप प्रीफर करोगे। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी डी है, डी, उसमें सिर्फ आपको 60 यूनिट्स खर्च करना पड़ रहा है टू रिड्यूस बाय 1 डे। So that is the most economical activity to crash, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ कॉस्ट नहीं देखेंगे, हम बाकी चीज भी देखेंगे कि किस एक्टिविटी को सिलेक्ट करके हम क्रैश करेंगे। ऑब्वियसली हम ऐसे एक्टिविटी को क्रैश करेंगे जो ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन को अफेक्ट करता हो, जो क्रिटिकल हो,